22. Okay, paragraph number 2. So, what was the meaning of freedom to Nelson Mandela as a kid? So, as a kid, Nelson Mandela, he was thinking that means freedom, it means to run in fields. Okay, means stay out at night, swim in the clear stream that was going by their village. Then, means that is the freedom according to Nelson Mandela as a kid. Okay, but very soon when he grew up, after growing up, he realized that meaning of freedom is not just going out and means running freely here and there in fields. So he realized deeper meaning of freedom. He realized that his brothers and sisters, so who looked like him, were not free. His brothers and sisters here, it means his countrymen. Brothers and sisters मतलब कौन? उसके countrymen. Okay. So those who look like him, they are not really free. So he joined South African National Congress, and then means he realized the meaning of freedom over there. He desired that everyone should have that right to live his or her life with dignity and respect. देखो, हर किसी को अपनी लाइफ डिग्निटी और रिस्पेक्ट से जीने का हक होना चाहिए. As you desire dignity and respect, in the same manner, other people desire dignity and respect from you. वो भी आपसे dignity and respect desire करते हैं. So, उनको लगता था, he wanted the oppressor and the oppressed to be liberated. Oppressor मतलब जुल्म करने वाला, and oppressed मतलब जुल्म सहने वाला. सो ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस दोनों लिबरेट होने चाहिए. मतलब ऑप्रेसर जुलूम करने से परे होना चाहिए, रुकना चाहिए, उससे फ्री होना चाहिए, एंड ऑप्रेस जुलूम सहने से फ्री होना चाहिए. द मीनिंग ऑफ ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड, इसका मतलब क्या? बोथ शुड बी फ्री, मीन्स ऑप्रेसर कैन नो मोर यूज एट्रोसिटी अगेंस्ट ऑप्रेस्ड पीपल. ओके, दैट ही वांट टू से. देन जैसे मीन्स as no one is free if one is taking someone else freedom. Okay, अगर किसी ने किसी का फ्रीडम छीना तो कोई भी फ्री नहीं रहेगा. छीनने वाला भी मतलब फ्रीडम नहीं यूज कर पाएगा, और जिसका छीना गया है वो पर्सन भी फ्रीडम को यूज नहीं कर पाएगा. छीनने वाले को लगेगा कि मेरे अब्सेंस में कहीं ये मिसयूज तो नहीं कर रहा है इसके फ्रीडम का, इसलिए वो अंडर टेंशन रहेगा. और जिसका फ्रीडम छीन लिया गया है, ऐसे इंसान को जिसका फ्रीडम ले लिया गया है, वो इंसान हमेशा बॉन्डेजेस में रहेगा. सो बोथ द पर्सन विल सफर. दोनों भी मतलब सफर करेंगे. वन सच ए फीलिंग कैन ब्रिंग ट्रू फ्रीडम फॉर एवरीवन. तो ऐसा जो फीलिंग है तो वो ट्रू फ्रीडम हर एक के लिए लाएगा. एंड दैट्स व्हाई, सो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम ही अंडरस्टूड व्हेन ही जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ओके, सी थर्ड पैराग्राफ. So it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. Okay, boyhood freedom क्या है? Illusion है. Okay, so illusion मतलब क्या? What is the illusion? Means what is illusion? Illusion it means just मतलब अपना मन का भ्रम. Okay, just our thinking. So that is illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. So as a young man, he discovered that he was not free. Okay. And he began to desire his freedom. I wanted freedom, and that I began to hunger for it. Now he became hungry for the freedom. At first, as a student, I wanted freedom for myself. When he was a student, he was thinking of himself. जब वो स्टूडेंट एज में था, उसने सिर्फ खुद के बारे में सोचा. दैट ही वांटेड फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ ओनली. ओके, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. जैसे उसको रात को स्टे आउट करने का मौका मिलना चाहिए. रीड व्हाट आई प्लीज, उसको जो मतलब पढ़ना है वो उसको पढ़ने को मिलना चाहिए. गो वेयर आई चूज, मतलब जहां उसको पढ़ाई करनी है, वेयर एवर ही वांट टू गो फॉर स्टडी, ही शुड गो. Later, as a young man in Johannesburg, I yearn for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. Hmm?
later as a young man in Johannesburg. उसके बाद में जोहान्सबर्ग में as a young man he yearned it means now he realized. Yearn it means realize. Okay, meaning of yearn it means realize. Okay, he desired that basic and honorable freedom for achieving my potential. So अगर उसको उसका potential achieve करना है, so what will be the freedom of of earning my keep? Earning my keep it means getting married. Okay, साउथ अफ्रीका में डिफरेंट मतलब ट्रेडिशंस है, शादी करना, वेडिंग सिचुएशंस डिफरेंट है. That is earning my keep, of marrying and having a family, getting married, having his own family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. और ऐसा फ्रीडम कि मतलब लॉफुल लाइफ में जिसका कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, नो ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द फ्रीडम इन हिज लॉफुल लाइफ. सो that is the meaning. Okay, this is the third paragraph. Now fourth one. But then I slowly saw that not only I was not free, but my brothers and sisters were not free. That I already told you, that his brothers and sisters, it means his countrymen, उसके countrymen भी free नहीं थे. I saw it was not just my freedom that was curtail. Curtail means cut off. उसने देखा कि सिर्फ उसका freedom cut off नहीं हुआ है, उसका freedom नहीं छीना है, but the freedom of everyone who looked like I did. मतलब मेरे जैसे दिखने वाले के, it means नेल्सन मंडेला जैसे other black people, that is his brothers and sisters, his countrymen, their freedom was taken away by government. And when I joined my African National Congress, then he joined African National Congress, and that is when hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. उसको खुद का freedom बहुत छोटा लगा. Then he decided that he should fight for freedom of his countrymen. उसके countrymen के freedom के लिए वो लड़ेगा. That he decided. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect. Just everybody is desiring, everybody is expecting that. Means what is the thing? That one should respect us, one should give us dignity, self-respect मिलना चाहिए, dignity मिलनी चाहिए. In the same manner, मतलब उसको भी लगा कि that his people, they should get dignity and self-respect. That animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. Animated, it means change. Animated, it means change. That change his life, उसके life में वो बदलाव आया. Then he transformed from frightened young man. Previously, he was a very frightened, means एकदम डरपोक type का young person था. So he became very bold, ready to accept any challenge. कोई भी type का challenge वो ले सकता है, but he want to earn that basic freedom of giving self-respect, of means living with dignity in South Africa, that he wanted to earn for him and his people. Then that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home. See, so that transformed a frightened young man into bold one. So he became frightened old man previously, now he became bold one. That drove a law-abiding attorney. अटॉर्नी क्या है? अटॉर्नी एक ये होता है क्या, मतलब लॉ के कोर्ट में अटॉर्नी नाम का एक पोस्ट होता है. वो पोस्ट मतलब लॉयर को मिलता है, वो कुछ मतलब उसका प्रोसीजर है. वंस ही कंप्लीटेड द प्रोसीजर, दैट लॉयर बिकेम अटॉर्नी. तो वो लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, मतलब वो लॉयर था ना, एलएलबी कंप्लीट किया था नेल्सन मंडेला ने, तो मतलब लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, पहले लॉ को मानने वाला वो मतलब अटॉर्नी था. सो नाउ means he was ready to become criminal in the eyes of government. गवर्नमेंट के आईज में मैं क्रिमिनल बना तो भी चलेगा. ओके, क्योंकि जो लॉ ब्रेक करेगा वो क्रिमिनल ना. जरूरी नहीं उसके लिए आप खून करो, ऐसा मर्डर करो. जिसने लॉ तोड़ा, जो गोरो ने लॉ बनाया था वहां पर, जिसने वो लॉ तोड़ा, he became criminal. So he was ready to become criminal. That turn a family loving husband, और उससे वो family loving husband तो is into a man without a home, homeless person, घूमने लगा, भटकने लगा. Force a life loving man to live like a monk. And life loving मतलब अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करने वाला इंसान एक monk की जिंदगी जीने लगा. What is monk, dear students? Monk, it means a person who is living without any home, सन्यासी like. Okay, that is a monk. Buddhist monk वगैरह सुने ना आपने,
In the same manner, so he was living like a monk, wandering from one place to another place, like that. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. Okay. So what he said, no virtuous man, पहले मतलब बहुत ज्यादा virtuous moral person, मतलब एकदम गुणी इंसान था वो, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मतलब बहुत सबके लिए सैक्रिफाइस करने वाला ऐसा बंदा था. बट नाउ मतलब वो उसका लिमिटेड फ्रीडम भी एंजॉय नहीं कर पा रहा था. ही वाज कंटिन्यूअसली हैविंग वन थिंग. उसको क्या चीज थी, मतलब कंटिन्यूअसली उसके मन में क्या चीज थी, व्हाट मींस व्हाट ही वाज डिसाइडिंग. यस 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 नवरत्न, राइट. वो क्या सोच रहा था कंटिन्यूअसली कि जब तक उसके पीपल को फ्रीडम नहीं मिलता, until and unless his countrymen are not free from this disaster, okay, so till he will not live a life of satisfaction, तब तक उसको satisfaction का life वो नहीं जी सकता. Freedom is indivisible. The chain on anyone, my people, were the chains on all of them. Freedom indivisible है, उसको divide नहीं कर सकता कोई. Okay. The chains on any one of my people were the chains on all of them. मतलब सबको बांध के रखा था. There were invisible chains. So that chains were means binded, means that chains were binded to each and every black person in South Africa. Okay. The chains on all my people were the chains on me, means everybody is means binded with that chain, and that is the chain of what was that, slavery. गुलामगिरी की चेन में बंधे हुए थे वो. ओके. वो उसको ब्रेक करना था. एंड ही डिसाइडेड बाय हिज हार्ट, अभी उसको मतलब पक्का डिटरमाइन, पक्का डिटर्मिनेशन, खुद से वादा किया दैट ही इज गोइंग टू चेंज द कंडीशन. ओके. ऑल्दो उसके लिए उसका लाइफ ही क्यों सैक्रिफाइस ना करना पड़े, बट ही इज गोइंग टू change the conditions. Okay. Last paragraph you can see. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. पहले ही बताया, oppressor जुल्म करने वाला, oppressed जुल्म सहने वाला, दोनों को लिबरेट करना चाहिए, दोनों को फ्रीडम मिलना चाहिए. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. देखो, एक इंसान ने दूसरे इंसान का मतलब अगर फ्रीडम छीन लिया तो वो क्या, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. हेट्रेड के लिए वो मतलब वो जो जिसका उसने फ्रीडम छीना है वो उससे हेट करेगा. ओके. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज. उसको प्रेजुडाइज की नजरों से देखेगा. प्रेजुडाइज मतलब क्या, कि उसके बारे में पहले से ही मतलब अलग अलग वो सोच के रखेगा कि दिस पर्सन इज सो एंड सो, दिस पर्सन इज सो. ऑल्दो उससे एक गलती हुई तो भी उसके नजरों में उसको 1000 गलतियां दिखेगी. स्ट्रॉन्ग डिसलाइक लाइक दैट विदाउट एनी गुड रीजन. एंड नैरो माइंडेडनेस, और नैरो माइंडेड रहेगा. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम नॉट टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. अगर मैं मतलब मैं सच में फ्री नहीं हूँ, अगर मैं किसी का फ्रीडम छीनती हूँ तो मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. So in the same manner, जब मेरा फ्रीडम भी कोई छीनेगा तब भी मैं फ्री नहीं हूँ, मैं किसी का फ्रीडम छीनूंगी तब मैं भी फ्री नहीं हूँ. Means both oppressor and oppressed both should be liberated. दोनों को फ्रीडम मिलना चाहिए. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Okay. दोनों ह्यूमैनिटी जो है तो ह्यूमैनिटी का खून कर रहे, रॉब कर रहे ह्यूमैनिटी को, ऑपरेसर एंड ऑपरेस, सो दैट बोथ शुड बी लिबरेटेड. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नेल्सन मंडेला said in the last paragraph. एंड इसी वजह से मतलब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बना. मतलब बहुत शांति से पीसफुली उसने अपनी लड़ाई जेल में से लड़ी. 29 ईयर्स तक वो जेल में बंद था, वो और उसके जो साथी थे. एट लास्ट साउथ अफ्रीकन व्हाइट गवर्नमेंट चेंज द माइंड, उन्होंने अपना मन चेंज किया. एंड नेल्सन मंडेला को बिना किसी मतलब जैसे व्हाट इल्जाम लगाए, एलिगेशंस, बिना किसी एलिगेशंस लगाकर मतलब उनको टोटली फ्री किया प्रिजन में से. मींस गवर्नमेंट एग्री टू निगोशिएट and agree to give freedom to black people, and this was the what we can say their triumph मतलब जीत. ये उनकी जीत हुई कि नॉन वायलेंस से उन्होंने ये जो अपनी लड़ाई है वो आगे बढ़ाई. एंड दिस इज व्हाट द we can say the lesson is Nelson Mandela's views, opinions that we have seen. Okay. So if you have
Okay, Aryan, you can ask now your question. Wait. Okay. So, see beta, oral comprehension check, first question on page number 18 is, where did the ceremonies take place? In the campus? Where did the ceremony take place? Can you name any public building in India that are made up of sandstone? Okay. See, ceremony means जहां हो रहा था वहां की प्लेस बोलनी है. The ceremonies took place in campus of Union Building of Pretoria. Pretoria is a name of place, and Union Building is a name of Pretoria is a name of city, and Union Building is a name of place, which were attended by dignitaries and leaders of many nations. So many leaders and dignitaries, it means respectful personalities, they were attending that meeting. एंड इन इंडिया मतलब जो ऐसे सैंडस्टोन में बनी हुई बिल्डिंग्स है, सो देवर राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट, ये जो दोनों बिल्डिंग्स है, ये दोनों बिल्डिंग्स सैंडस्टोन में, रेड सैंडस्टोन में बनी हुई है. ओके, रेड सैंडस्टोन में ये बनी हुई है. सो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ आंसर, यू कैन टेक, otherwise I will move ahead. Students, should I wait for a minute or move ahead? Next question. You have to write these questions for as a part of your homework. You have to write these questions. Okay. So, Ma'am, yes, ma'am, beta. please show previous screen. Okay, beta. Okay. Take screenshots, or if you are writing, you can write also. Done, ma'am. Okay. So second beta, can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? अभी autumn day बोला है. Autumn it means क्या? Change in season. Okay. Autumn it means change in season, that is known as autumn day. Okay. So can you say 10th May is an autumn day in South Africa? Okay. 10th May is an autumn day in South Africa because on this day there was the largest gathering of international leaders on South African soil for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. जहां पर कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जहां पर ब्लैक्स एंड व्हाइट्स की मिलकर गवर्नमेंट बनने वाली है. सो दिस इज द चेंज. तो ये चेंज था, जस्ट एज सीजन चेंज होते हैं वैसे, मतलब ये बहुत बड़ा चेंज साउथ अफ्रीका के सॉइल में आने वाला था. एंड दैट्स व्हाई 10th May इज रेफर्ड एज ऑटम डे. देन बेटा, समझ में आया ये? Yes, ma'am. Screenshot you can. Shall I move ahead? Yes, ma'am. Then next, third question I haven't written. It is a little bit what you can say longer one that I will discuss in later meeting. So what does Mandela thank the international leader for? मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर को थैंक यू बोला था. रीजन क्या है? Mandela felt very privileged to welcome the international leader at swearing in ceremony because not too long ago the South Africans were considered outlaws. तो मंडेला ने सबसे पहले तो स्वेयरिंग इन सेरेमनी, दैट इज शपथ विधि, उनका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट्स जो चुन के आई थी वो स्वेयरिंग इन सेरेमनी में so many international leaders they were attending that ceremony. So he thanked, क्योंकि साउथ अफ्रीकन जो है ना, तो इनको आउटलॉज मतलब अनसिविलाइज, इनको कुछ भी आता जाता नहीं, अनएजुकेटेड मींस ऐसे टाइप के, जस्ट ट्राइबल पीपल ऐसे माना जाता था. He just thank all of them for having come to witness the historical ceremony. So that historical change was there in the minds of people, that what was the change, that even they accepted these South Africans, they were human beings, they were civilized one. And so that was historical ceremony, and this was the gesture of international recognition
to newly born or pre-democratic nation, and it could be considered a common victory for justice, peace, and human dignity. So it is an international recognition that newly born a democratic nation, and for this democracy, so many people they were witness to the event, and so it is a common victory for justice, peace, and human dignity. सबको जस्टिस मिला, सबको पीसफुल लाइफ मिलेगा, ह्यूमन डिग्निटी, सबको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगा. So that's why means Nelson Mandela thanked other international leaders for witnessing the event, witnessing the ceremony. Shall I move ahead? Taken screenshot, beta. What ideals does Nelson Mandela set for the future of South Africa? साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए क्या क्या आइडियल्स सेट किए? नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज, deprivation and suffering. Okay, he also set the ideal for society where there would be no discrimination based on gender or racial origin. Okay, what he said? Okay, 1 minute. Last slide, somebody requested for last slide. Do fast, beta, so that we can complete it within the time. Shall I move? Okay. So Nelson Mandela set future of South Africa like जो लोग बंधन में बंधे हुए हैं, that is bondage, free from bondage, liberating those people. Liberating means making free. Deprivation मतलब जो लोगों को इक्वल राइट से दूर रखा गया है. डिप्राइव मतलब क्या? किसी चीज को मिलने नहीं देना. सफरिंग्स जिनको दुख दिया गया है तो उनको उनकी दुखों से मुक्त करना. ठीक है. एंड ही आल्सो सेट आइडियल फॉर द सोसाइटी दैट नाउ देयर henceforward no discrimination will be there on the basis of gender or racial origin. ठीक है. जेंडर को लेकर और रेशियल ओरिजिन, ब्लैक एंड व्हाइट को लेकर कलर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में नहीं होगा. सो दिस टू आइडियल्स ही सेट. टेकन बेटा स्क्रीनशॉट. Shall I move ahead? Next, page number 21, oral comprehension check. Okay, beta. See, what did the military generals do? Sorry, why were the two nations anthems sung? Two national anthems sung. Sorry, why were two national anthems sung? दो national anthem गाए गए थे. On the auspicious occasion, on the auspicious occasion of the inauguration, two national anthems, one by whites and other by blacks. So even we can note down from here itself that the national anthems were also different. Blacks अपना अलग national anthem गाते थे, whites अपना अलग national anthem गाते थे. So on the occasion of inauguration, वो inauguration के time पर दोनों national anthem गाए गए, one by whites and other by blacks, symbolizing equality of blacks and whites. ये दोनों साथ साथ, एक पहले उसके बाद दूसरा. It means blacks and whites they are now having equality, greater equality. There will be no more discrimination between blacks and whites. It suggests and so that two national anthems were sung at the time of occasion. समझ में आई है? Got it? Yes, ma'am. Next. Next slide you can see. This is the last question for today. What does courage mean to Mandela? मंडेला के हिसाब से courage मतलब क्या है? For Mandela, courage means the absence of fear, but a victory over it. Courage मतलब क्या? कि courage does not mean the absence of fear. Does not should be there. Does not mean the absence of fear. मतलब just डरना नहीं, ऐसा नहीं, but a victory over it. उसको पूरा जीत लेना. Fear को पूरा जीत लेना. According to him, brave men need not to be fearless, but should be able to conquer fear.
फियरलेस होना जरूरी नहीं है, फियर को जीत लो. So you please add after does not. Courage does not mean.